So good morning to all of you once again, and hope you had a very nice session. Short-term course, gender sensitization, बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा और आप sensitize सही मायने में हुए होंगे. Let's hope that this helps you to transmit the knowledge that you've gained to your colleagues, to the place of your work, क्योंकि gender का एक बहुत अहम हिस्सा होता है space. I don't know if Preeti, if anyone has spoken about space, gender and space. No, वो ma'am. भी एक वो भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है बिकॉज हम लोग जिस स्पेस में रहते हैं, whether it's a work space, whether it's a home space, वहां पर जेंडर का बहुत बहुत बड़ा it's so difficult to say everything within 1 week. जेंडर पर तो कोर्स किया जा सकता है, 6 months का कोर्स होता है जेंडर पर, and there are so many things that can be discussed. But this is one very important thing. For example, space, when I'm talking about space, you see, till recently we did not have toilet facilities for women. लड़के तो कहीं पर भी चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए अभी जब तक सुलभ नहीं बना था, तो सुलभ बनने के बाद वो, सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स. लड़कियों का स्पेस, जेंडर का स्पेस होना बहुत जरूरी होता है. ओनली देन you can feel secured, you can feel safe. So the last day I was talking about a different topic. Today I will be talking more on academics, and many of you are aware of NEP 2020. Maharashtra has not implemented NEP, isn't it, Preeti ma'am? Yes, ma'am. Has Maharashtra has implemented NEP 2020? Not yet, not yet. Not yet. But our state, Jharkhand, has implemented NEP 2020. Yes. So, wahan, we have already, and gender is a very important component of NEP 2020. So, today I'll be talking about gender diversity in higher education institutions. When we admit one student into a college, an institution or university, what are the things that we look for in the student? आप लोग kindly unmute करके बताइए. The form that the student fills up, उसमें क्या क्या रहता है? Any idea? Ma'am, it has the name of the student. Name is there. The gender is there. Wherein? What else? Then the percentage, how much he has in the Yes, last percentage of examination. marks is important. Apart from that, Male, female. Blood group is there usually in our forms. Blood group is there, and then Aadhaar number and other things. okay, Demographic those are details. all Male, female. identity. Those are all identity. To do with identity. Anything else? Rural, urban. Place of residence. And Male and female. Male. male, female, and Caste, refugee or refugee. category. Caste is very important, isn't it? Yes. We have category. SC, ST, OBC, general. OBC may be category. Whether OBC 1, 2 or 3, creamy layer, non-creamy layer, that is asked. Nationality of the student is asked, whether the student is Indian or has come from overseas. कहीं नेपाल से आ सकते हैं, बांग्लादेश से आ सकते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे देश से आ सकते हैं. So nationality is asked. Income of the parent is also asked sometimes. Yes. It is asked, no? Yes, ma'am. Yes. So what I'm trying to say is that when we are taking students, we are taking students from diverse background. Different types of students are admitted to the institution. Now, what is happening is when students from diverse background, whether it is rural background, whether it's urban background, whether it is SC, ST category, or whether it is general category,
whether the person's parental income is more or parental income is less, whether the person has achieved more marks or less marks, all these things are asked. That means that we are not admitting a homogeneous group. हम कभी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को एडमिट नहीं करते. हम लोग जब एडमिट कर रहे हैं तो हम एक हेट्रोजिनस ग्रुप को एडमिट करते हैं. उनके कास्ट अलग होते हैं, उनके लैंग्वेज अलग होते हैं, उनके बैकग्राउंड अलग होते हैं, their income group is different, everything is different. Now the same thing is, Culture also different. sorry Sheila ma'am, Yes, ma'am. Culture also different. culture will come later on, no Sheila ma'am. Once we are inside the classroom, then we are thinking of culture. जब फॉर्म फिलअप होता है तब हम कल्चर के बारे में नहीं सोचते. एक और चीज हम डालते हैं उसमें, फिजिकली हैंडीकैप्ड है कि नहीं. इफ फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि वेदर इट्स विजुअली इम्पेयर्ड और फिजिकली इम्पेयर्ड, वो भी हम लोग आजकल डालते हैं. कल्चर को हम लोग अलग फॉर्म में नहीं रखते हैं. इफ यू शीला मैम, इफ यू सी द फॉर्म, उसमें कल्चर का पता नहीं चलता. कल्चर का पता तब चलता है जब when the student is inside the classroom. You as a teacher, as a professor, you are interacting with the student, then you come to know that what is the culture of the student. Okay, so then people coming from vernacular background, Hindi medium, Marathi medium, and people coming from English medium background, people coming from elite schools like public schools, international schools, people coming from rural schools or municipality schools, government schools, both they will be different. So what I'm trying to say is that diversity exists in the campus right from the time that the person enters the campus. We are not talking about only the students. What about the teachers? Even the teachers come from very diverse backgrounds. Now, when you're teaching in the National Capital Region of Delhi, you are teaching, supposing you're teaching in St. Stephen's College or Lady Shri Ram College, or you're teaching in JNU. आपका लेक्चर का मोड क्या होगा, आप बोलिए. You will be speaking in which language most of the time? English. 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 Okay. English. Now, for a person who has studied in a Hindi medium or Marathi medium, vernacular medium background, उनके लिए ये थोड़ा एक डिफरेंस होता है when he is going and teaching in the National Capital Region, where he is having students from different countries. He has to speak in English. JNU में आपको पढ़ाना है तो you have to, yes, you have to Rampure, Sheila Rampure saying Hindi English, okay. But mainly in big universities like Delhi University or Jawaharlal Nehru University, most of the lectures are given in English. Now for a teacher who is coming from a rural background, जो एकदम गांव से आ रहे हैं, जो मराठी मीडियम में पढ़े हैं या जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, जो उड़िया मीडियम और बांग्ला मीडियम में पढ़े हैं, उनके लिए वो बोलना मुश्किल हो जाता है. बिकॉज दैट पर्सन विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल स्पीकिंग इन अ लैंग्वेज इन विच द पर्सन हैज नॉट स्टडीड. तो वो भी एक डाइवर्सिटी क्रिएट करता है when the person is meeting someone who is already coming from a very privileged background, who has studied in St. Stephen's and is now teaching in Delhi University, or who has gone to Oxford and teaching in Delhi University, and someone who is just studied from a local college, maybe a very good student, and then even at the university level the person has not been did not have to learn English, that person is teaching in the same institution. तो आपको समझ में आता है कि डाइवर्सिटी सिर्फ स्टूडेंट्स में नहीं होता, डाइवर्सिटी टीचर्स में भी होता है. तो मेरा ये मकसद है आज आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना कि डाइवर्सिटी है, ये तो आप लोग मानते हैं. जैसे कि हम एंटर करते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन कहीं पर भी, वहीं से डाइवर्सिटी शुरू हो जाता है. बिकॉज द कैंपस इज अ हेट्रोजिनस प्लेस, इट इज नॉट अ होमोजिनियस प्लेस. यहाँ पर जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता है, इट इज देयर इन द स्टूडेंट्स, इट इज देयर इवन इन द टीचर्स.
So this diversity exists. Now, the second part of my lecture, which Madam has already said, is about NEP 2020. What is NEP 2020 doing about this diversity? So let me tell you a little small history about how higher education policy, why did we have NEP 2020? इससे पहले also we had education policies. The last one, Kothari Commission had come in 1980s. Kothari Commission had set up a policy. At that time, whenever we had previous education policies, our main objective was to make India literate. क्योंकि we were all illiterate. At the time of independence, we were all illiterate. Only 10% of the people were literate in higher education. तो उनको लिटरेट बनाने के लिए, उनको कॉलेज तक लाने के लिए बहुत सारी चीजें की गई, जैसे कि we had adult education, we had Kothari Commission having some policies for free and compulsory education for at the primary level. ये सब हम लोगों ने किया. तो ये अलग कैसे बना? ये करते 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 वी केम टू अ पॉइंट जहां पर हमने देखा कि यूनिवर्सिटी लेवल में कोई आना नहीं चाहता है. प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल तक एजुकेशन तो है, उसके बाद पीपल आर हेजिटेंट टू कम फॉर हायर एजुकेशन. तो ये रियलाइजेशन हमें 2010 में हुआ. 2010 में the government suddenly realized that the GER, gross enrollment ratio in higher education institution is very less. और उसमें ये देखा गया कि there is a class divide. Only people who belong to the elite class are coming to the institution. चाहे जितना भी मंडल कमीशन हुआ हो, जितना भी हम रिजर्वेशन कर रहे हो, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में ये देखा गया कि पीपल वे डिबार्ड, उनको मना किया गया कि आप मत आइए, आप कॉलेज में मत आइए, आप हायर एजुकेशन में मत आइए. तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के सबसे पहले हम लोगों ने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, वी स्टार्टेड विद ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. वी ट्राई टू इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. व्हाट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो? एनी आइडिया ऑफ GER क्या होता है? What is gross enrollment ratio? Yes, anyone who can put it, you can put it even in the chat box or you can unmute and answer. Gross enrollment ratio क्या होता है? Yes sir. अगर प्राइमरी स्कूल में 100 बच्चे हैं तो हायर एजुकेशन तक 12 ही बच्चे पहुंचते हैं तो 12% ये रेट होगा. ये तो आपने बता दिया कि कम हो जाता है. What I want to know is what is gross enrollment ratio? Any idea of what is GE? Number of students going for higher education, Yes. Number of enrolling for higher students education. enrolling in Yeah. for education. So that is, you have given in a ratio, you have a numerator and a denominator. Isn't it? Ratio is just not one unit. It has to have another unit to link with it. Archana ma'am? Archana and Suparna? Yes, ma'am. Yeah. So you are absolutely right, ma'am, that it is the total number of college going, or higher education going students in relation to those who are eligible for that. That is the ratio. GER का मतलब हुआ, for every 100 students who are eligible to go for higher education, maybe only 14 are going. So the ratio will be 14:100. Am I clear over here? So E should be then eligible, ma'am. madam. Why it is enrolling? It is a gross enroll. They are not enrolling. It is not eligibility. They are not enrolling. They are not going. When you go to any institution and you find out that how many have enrolled, okay, then you will see that in that locality there are many more who can enroll, but they are not enrolling. They don't have access to education. So gross enrollment ratio is actually for higher education, it is 18 to 23 years, because that is the period you complete your intermediate by that time. And 18 to 23 years is the time when you are doing your graduation, your post-graduation. So that in that age group, there may be 100 students, but how many are enrolling for higher education?
So that is gross enrollment ratio. Am I clear about it now? Yes. Yes. Okay. So that Yes. is why it's called gross enrollment ratio. It is not eligibility. Eligibility is different. Eligibility means you can go, but how many are enrolling, that is more important. For example, in this course, 100 people are eligible maybe, but your course coordinator or your the director chose only 30 or 35 because he wanted to limit the seats. So that is you all were the ones who had enrolled. Okay. So Rajeshri Kadu ma'am, you are very busy with your attendance. I'll start sharing screen. Okay. Yes, Ma'am, madam. there Yes. is one query. Yeah. Just one query. Yes, ma'am. Ranjana Sahu. Ma'am, do we have enough number of higher educational institutions to accommodate all those who are eligible for that? Very nice question, ma'am. Very nice question, Ranjana ma'am. Ranjana ma'am, are you aware of how many universities we are having in India? Uh, Any idea? not exactly the number, but the question has come to my mind only when I realized that in grant setup, we have two setup, grant and no grant. And Hmm. there is huge number of application for grant setup wherein they can avail for those education for a lesser fee. And for no grant, even when we want some students, they do not enroll because then they wait for 1 year gap, let us say 2 year gap, and they want admission only in grant setup. So that was my query or Yeah, but then Ranjana ma'am, my question to you was, have you any idea as to how many now this is not my question to you alone. This is my question to the entire group. Are you all aware of how many universities are there? ma'am, must be around 1,000. More than 1,000. More than 1,000. And we are You talking, know, Ranjana ma'am, you're talking about grant central, and not having grant in aid and private and all. Let ma'am, me tell you, funded central universities are 43. yes, Funded central universities are 43, and many okay. more are there in all over India. All over India, there are 1,000 plus. Yes. I will give you the statistics now. There are many universities, there are many private universities, central universities, state universities, they're all there. Deemed Now, the university. question that Ranjana ma'am asked was that do we have enough infrastructure? Isn't it, Ranjana ma'am? You asked this question. Are Yes, there ma'am, enough yes. colleges? Because at the back of your mind you have this fear that people are not going for higher education. वो नहीं जा रहे higher education के लिए क्योंकि उनको पैसा देना पड़ेगा. They have to pay. Okay, so that is not an issue. The issue is not that there aren't enough. What they did was, if you just go back 5 or 6 years back, what in 2015 what they started doing was, gross enrollment ratio को बढ़ाने के लिए they started a second shift in many colleges, many universities. Even Maharashtra must have done that. Many, then came up RUSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. Are you aware of that? Yes, ma'am. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, Yes, RUSA. ma'am. Yes, ma'am. Yeah. We are getting What? funding for it. Yes, RUSA was set up for funding purpose. You could build a model college in a remote area so that what happened, even the rural people could go to college. So we tried, infrastructure was being developed, but then for infrastructure, it is not only sufficient to have classrooms, it's not sufficient to have just a building. We should be having enough teachers to teach them also. Then what we did was we started taking all those contractual teachers. We took contractual teachers. Then we also asked research scholars
who were working on in the university, that they had to come and take some classes, because university was functioning in 2 or 3 session, morning shift, afternoon shift, evening shift, so that where one student was being admitted, 3 could be admitted if there were 3 sessions. So that was the effort that the government took up just to increase gross enrollment. और gross enrollment बढ़ा, ऐसा नहीं है कि gross enrollment नहीं बढ़ा, लेकिन अभी NEP 2020 फिर हम क्यों ला रहे? इससे पहले हम क्या लाए थे? अब बोलिए, CBCA सिस्टम लाए थे कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो CBCA सिस्टम हम लाए, फिर 3 साल 4 साल में CBCA सिस्टम को मारो गोली. नाउ वी वांट टू गो फॉर NEP 2020. The main objective for NEP 2020 is that skill factor which is lacking in the education system, Indian education system. अगर आप NEP 2020 को अच्छे से देखोगे तो उसमें क्या है कि स्किल जो हमारे, it is there in our culture. We always had skill, but that skill was caste based. If you notice, बड़ाई का लड़का बड़ाई होगा, धोबी का लड़का धोबी होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा. That was the concept. So it was more or less, family or caste based. You never had people from one upper caste taking up jobs like plumbing or cleaning. Those jobs were not taken up. That skill was left for those people who were into that job. So now somewhere we felt that we are lacking skill. And that is where NEP 2020 comes in, and NEP 2020 tries to make higher education multidisciplinary, multi-institutional, with multiple exit entry points, and inclusive, not diverse. It wants to make it inclusive. यानी जो भी होगा वो सबके लिए होगा. You just can't have one set of students becoming engineers and then what happens to them? They go and become bank managers. No, that is what is happening. So the NEP tries to put in skill even in the graduation level. अभी जो 4 साल का ग्रेजुएशन बन गया है in NEP 2020, इसमें क्या है? For the first 3 years you are just getting your degree in the particular subject, major, एक major. मतलब अगर आपका history subject है, you're getting history major, but with that you are taking up a number of skills, whether it is yoga skill, whether it is community service skill, whether it is computational skill, whether it is digital literacy, whatever it is, you have to be fit for the profession you want to take up. ऐसा नहीं है कि just because you are doing majoring in history you will not know computers, or you will not, if you are majoring in physics you will not do community service. So with that aim the NEP 2020 was set up. Okay, so now can I move ahead? Yes, ma'am. Yeah, so this is diversity. I'll start with this slide. What is diversity? And you can see that diversity means it is a heterogeneous group, because society is diverse. इसलिए हमें सब कुछ दिखता है, हमें culture, race, physical abilities, gender, sexual orientation. I was talking about gender the other day. So gender, sexual orientation, ये सारा चीज जो है, ये nationality, experiences, thinking style, everything creates diversity within the campus. So when a person enters the campus, the person knows that he is entering an area which is not very familiar to him. He is entering into a mixed cultural zone where he will meet people from different backgrounds with different skills. ये भी हम लोग देखते हैं कि students when they enter higher education institution, they learn, they pick up some skills like drawing or painting or singing, जो कि पहले वो लोग नहीं करते थे. यहाँ हॉस्टल में रह के ये सब भी सीख जाते हैं. So what I'm trying to say is
Student diversity is existing, and it is existing in various forms. Now, when I come to the next slide. Yeah. So the concept of gender and the concept of sex. See, when I'm saying sex, I already mentioned the previous day that sex is biological. Sex is determined at the time of childbirth. Sex is something which later on transforms into secondary sexual organs like beards, and sex does not change. You cannot change your sex until and unless you go for a surgery. When you talk about gender, then it is a social construct. I've already told this. It has to do with child care, not childbirth. How you bring up a child will determine the gender of the child. It changes easily. And in my last lecture, I already told you how you can change, you can be a transgender, transsexual, transvestites, you can be a queer. I already mentioned that. And the decision of choosing the gender rests entirely on the person. It is not something that anyone else can do for him. If a person chooses to be a boy in spite of being a girl, or chooses to dress up as a male, then it is his choice, her decision. Now, the differences that exist in the campus. When you enter a campus, the first thing you notice is the physical difference. If it's a co-ed campus, you will see that boys and girls, they all exist and they happily coexist. The second difference that you find is a social differences in gender roles. Now, what is social difference in gender role? Now, I'll just ask you a question. जब आपके college में, when there is a VIP or a chief guest who is coming to the college or the university, तो लड़कियों को क्या काम दिया जाता, लड़कों को क्या काम दिया जाता, बोलिए. What roles लड़कियों लड़कियों को उनका स्वागत करने के लिए बताया जाता है डेकोरेशन डेकोरेशन के वर्षा लिए वर्षा और तिनी मैंने एकदम एक साथ बोली. हाँ हाँ, बहुत अच्छा. That is the fact. That is the fact. That मतलब is the gender fact. based वहीं से Wha- शुरू हो what are- जाता है. What are the men doing in this course? What are the men They doing? are Why can't I bringing hear they their are bringing voices? the case. They are bringing the case disciplinary. Yes, Dini Menon, you're absolutely right. But I want to hear some male voices also. I have not been able to hear any male voices. आप लोग सब सुबह सुबह सो जाते हैं क्या, sir? No, madam. No? Bhatta sir, you were very vocal that day. Where are you today? I am very much here. The boys, in case of when the VIPs come, the boys are given. Hello, Yes, please continue. hello. Yes, sir. Please continue. Yes, sir. When some VIPs come, when some VIPs are into the campus, the boys, the males are given more jobs rather. Okay, tough jobs, right? Like of the stage, then the other music and volunteering, controlling the students. These are the jobs generally allocated to the male students, whereas the female students, they are given the jobs like as my colleague Chappe madam and Dini madam said, welcoming the guests, then escorting them to the days, then escorting them to the dinner table or the lunch table. So, sir, These are the jobs generally allocated. So, what are you doing with women? You keep them as a trophy. You are just And showcasing. in some cases, the most good job rather is that on the stage the girls or the females are generally selected for anchoring or comparing. Yeah, because they have a nice, sweet voice, Yes, because good demeanor, they have they dress up well. a Okay, sweet voice. fine. But Yes, tell because me, they have sir. yes, they dress up well, but and tell then me, they express the views properly.
Why Yes. this categorization? Why, Why this this? categorization? Yes, Dini Menon Yes, is yes, yes, ma'am. right. Why can't women handle logistics? Why don't you give the entire, sound system? Women they are handling the sound system, they can handle the logistics, they can handle the visuals, everything can be, even the computer, camera, everything can be handled by them. But what, Govind sir, Bhatta sir, I think there's some Yes, ma'am. music going on at the background. Yeah. So No. where is it going on? Somewhere it's going on. Anyway, so what I'm trying to say is that we create differences, social differences, even within the campus. Okay, so if you have your faculty, which is both heterogeneous faculty of male and female teachers, then automatically you put the female teachers. If you have a woman as a principal, maybe she will think differently. But if you have a male as a principal, he will of course think it differently. Coming to the third point, the academic and cognitive differences in gender. Now there is one thing, someone after me, you have a speaker from psychology who will be speaking on this cognitive differences in gender. There's a question that whether women are more brainy or men are more brainy. So there is a debate on that, and let me tell you that there is no scientific evidence to say that men are brainier than women. So there is no academic or cognitive difference in gender. And you can verify it from your next speaker, who is from a psychology background. She will also say that it's the same thing, because it's not been proved. Men and women, it is individual, cognitive difference cannot be of gender, it can be of individual. How your brain is responding to a particular problem, it is up to the person. It is not up whether you are a man or a woman. Women can take up challenges, women can act in crisis, they can be very, very firm, everything. But somehow we have this thing in our mind that women cannot handle critical situation, women cannot handle crisis, they can't do this. That's in the mind. And so we try to give them softer jobs, and this is the trend. When you see women, they are taking up more women are taking up admission in humanities, in social science, where hardcore research is needed, in science, where STEM subjects are needed. STEM, science, technology, engineering, medicine. Here you find more men. All the topmost institutes are male dominated. Women are not allowed to go because their parents want them to settle into domesticity. इंग्लिश ऑनर्स पढ़ लो ना, उसके बाद तुमको तो टीचर की जॉब मिल ही जाएगी और तुम्हारी शादी अच्छे से कर देंगे, बस. दैट इज द एंड ऑफ अ वुमेन्स लाइफ. But I'm not going to that. I'll now talk about attention paid. Gender differences in campus में attention paid. If you just notice that if a group of boys are standing and talking, their voice level is higher and they usually get heard. But when you have women, they are not heard. So the attention that is being paid, there is a difference, because women tend to be softer, so the attention is paid more towards the male students. And that is not because they want to create a difference, it's because their voice appear to be louder. Where public and private talk is concerned, you will just see that if a male professor has to talk to girls, he will keep his distance, because privately he doesn't want to create any sort of problem. He'll keep his distance. That same professor, when he's talking to a group of boys, he may be a little more casual. He may put his hand on the boy's shoulder. So that can also happen. So that is not a big thing. And publicly, privately, we find these things that are existing within the campus. When distributing praise and criticism is concerned, we always say कि लड़की बड़ी सुशील है, लड़की बड़ी शांत है, उसकी आवाज बहुत मीठी है और सौम्य है, सभ्य है. For boys, we give different attributes. This boy is very smart. He picks up things very fast. He's very his PR is very good. These types of things we usually do. I'm not saying that everyone does,
But knowingly, unknowingly, we create this type of a difference within the campus. So I move on to the next slide, which says that higher education talks about inclusion, and this inclusion means you can see all sections of the society have to be included. We just can't say that gender means male and female. No, inclusion in higher education means everyone has to be given a fair chance and all expected goals of education should be met. इन दोनों का balance होना बहुत जरूरी है. Only then we can have the concept of inclusion in higher education institution, and that is exactly what NEP 2020 is aiming at now. Am I clear? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is for Anjana ma'am. Ranjana ma'am had asked me whether we have sufficient colleges for our students. So ma'am, I'm just sharing a data 2018-19. That is why I'm taking this data. That's pre-COVID. Post-COVID, things have changed. We have shifted to online education and all those things. But in 2019, women formed 48.6% of the total enrolled students. So when I'm talking of GER, what I'm trying to say is that for every 100 students, only 49 girls are being enrolled. अगर 100 students है किसी एक क्लास में, उसमें सिर्फ 48 लड़कियां ही है, तो 48 से ऊपर नहीं है, यानी 50% से कम है. Now, why is this happening? This is not because we are not having colleges or we are not having institutions. This is because women are not allowed to pursue higher education by the society. School tak pad liya hai, that's enough. You don't have to go for higher education. That is a normal belief. Then, secondly, there are academic divisions, both vertical and horizontal. Now, what is the academic division? Academic division is you are segregating the entire education system into science, arts, commerce, vocational, social science, humanities, all these things. You are vertically, you are categorizing. So the entire education system is categorized. For example, vocational. अगर किसी को BCA पढ़ना हो, तो वो vocational में आ जाता है. Now, vocational doesn't come under Ministry of Higher Education. It doesn't come under MHRD. It is coming under skill development. So it comes under a different ministry. It was coming. Now, what is happening is that vocational was never included into the mainstream. So we are creating vertical divisions. Vocational, we are giving skill, but then that skill cannot be used for the general or the mainstream. Then there is horizontal division also. We have part 1, part 2, part 3, or we have semester 1, semester 2, semester 3. In that horizontal division, what is happening? You pass one stage, you go to the next stage. You pass the second stage, you go to the third stage. You have a period of 5 years to complete your education. You can't leave anywhere in between. If there's a horizontal strata, you have to complete. आपका 2 साल के अंदर अंदर इतना complete करना है. That was a norm. That was the situation. NEP 2020 में क्या कर रहे हैं? You have exit, multiple entry exit. After completing 1 year, you get a certificate and then you can make an exit. You can go and work in some industry. You can get some work experience. You can come back and then with the money that you have earned, you can go for the next stage. अगले सेकेंड ईयर के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर के बाद आपको डिग्री मिलेगा, ऑनर्स डिग्री मिलेगा, और फोर्थ ईयर के बाद आपको ऑनर्स विथ रिसर्च मिलेगा. सो दिस 4 year this system. Yes, Varsha? मेरे इसमें क्वेश्चन आया कि जैसे Yes. अगर मैं 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर आर्ट्स ले रही हूँ
और 1 साल के बाद मुझे अब लग रहा है कि मुझे आर्ट्स नहीं करना है, मुझे अभी साइंस में जाना है, तो मुझे 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन ऐसे इसमें मैं साइंस की तरफ जा सकती हूँ या नहीं, ये मुझे उसमें समझ में ही नहीं आया जब मैंने पढ़ा उसको। ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं। आपके पास ना यू हैव अ बास्केट, एक्चुअली यू कैन ओके, चूज फ्रॉम द बास्केट. So what NEP is saying is that even for your honors, you don't have to, you can take up your whatever subject you want, you can pick up. It can be, you can take up maybe first year में आप history ले रहे हैं as your major subject. ओके। सेकेंड ईयर में आपको हिस्ट्री अच्छा नहीं लग रहा है तो आप किसी और सब्जेक्ट को ले रहे हैं. हाँ, लेकिन हाँ। इसमें ना, इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है कि कॉलेजेस को प्रॉब्लम हो जाता है हाँ, वही एनरोलमेंट मुझे के इसीलिए टाइम में. मुझे यस. हाँ, तो यस। हम लोगों ने क्या किया, व्हाट वी डिड इन आवर यूनिवर्सिटी इज दैट वी विल गिव द मेजर हम एक ही रहने देंगे, मेजर को ओके। हम लोग चेंज नहीं करेंगे. तो हाँ, हाँ। इससे क्या होगा कि उस स्टूडेंट को उसी मेजर में वो कंटिन्यू करेगा, बट we are ओके, giving a number of, we are making from the basket the student can pick up any subject as a subsidiary subject. तो सब्सिडरी, ओके। हिस्ट्री, यस. सो हिस्ट्री ऑनर्स के साथ अगर उसको म्यूजिक पढ़ना है तो वो म्यूजिक भी पढ़ सकता है, अगर उसको फिजिक्स पढ़ना है तो वो फिजिक्स भी पढ़ सकता है, कंप्यूटर पढ़ना है तो कंप्यूटर भी पढ़ सकता है. ओके, इतना हम उसको दे रहे हैं. अब क्या हो रहा है कि 1 साल बाद द स्टूडेंट हैज गॉट सम क्रेडिट्स. इसमें हाँ, एक चीज होता है, इट्स you have this academic bank of credits ABC. आपका ओके, क्रेडिट्स जुड़ता जाएगा. क्रेडिट मीन्स एक्चुअली द नंबर ऑफ आवर्स. ओके. ओके, सो आपका क्रेडिट जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा. उसके बाद आप जब 3 साल, इसमें इस बीच आपको कहीं जाना है, मान लीजिए महाराष्ट्र में है, आपको दिल्ली जाके आगे की पढ़ाई करनी है, आप जाइए, आपके पास इतने क्रेडिट्स है, उस क्रेडिट्स को लेके आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, या दिल्ली का कोई बच्चा महाराष्ट्र में आके पढ़ सकता है, नो प्रॉब्लम. बट जो एक राइडर रखा है कि 4th ईयर जो कि रिसर्च ओरिएंटेड होता है, उसमें कौन लोग जाएंगे? वही लोग जाएंगे जिनका CGPA 7.5 से ज्यादा होगा ऑन अ स्केल ऑफ 1:10. तो 1 to 10 स्केल में CGPA 7.5 होना मतलब 75% उसका मार्क्स आना चाहिए. मार्क्स होगा। हाँ, तो वही लोग जाएंगे रिसर्च के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे देश में बहुत रिसर्च होता है विच इज, और उसका आउटपुट इज एब्सोल्युटली नथिंग. तो क्यों हम लोग इतना रिसर्च कर रहे हैं जबकि उसका कोई हमारा एक पेटेंट नहीं है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है सोसाइटी में. ओनली दोज पीपल who really are good in studies and who can pursue higher education, let them go for that. remaining students वो क्या करेंगे? उनको तो हम कुछ ना कुछ स्किल दे रहे हैं ना 3 साल में. they are learning something. maybe they are learning, हिस्ट्री वाले टूरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, अब टूरिज्म के बारे में पढ़ के वो टूरिज्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, या आर्कियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आर्कियोलॉजी का कुछ काम कर सकते हैं, या इवन अगर वो जियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वो माइनिंग रिलेटेड काम भी कर सकते हैं. तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू ऑफर टू द स्टूडेंट्स, दैट जस्ट एज इन द वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे होता है, हम लोग उसी तरह से मल्टी स्किलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, so that when the person is leaving the university, the person is having some skill along with the knowledge, which is very important. Okay, so ma'am, are you satisfied? यस मैम, थैंक यू। Okay, thank you for the question. आई वुड वेलकम क्वेश्चंस, बिकॉज ये जो चीज है ना, हम लोग जितना डिस्कस करेंगे आपके लिए भी क्लियर होगा, मेरे लिए भी क्लियर होगा. Hurdles experienced by women teachers and researchers. This is another thing in India that we are facing, that women teachers and researchers, they have very limited presence. Women are, lesser women are coming for higher education, and therefore lesser women are going for research, or lesser women are coming back for academics. They may be going for other sectors, but academics में वापस नहीं आ रहे हैं. And there are leaky pipelines. What is leaky pipelines? Leaky pipelines मतलब जो ड्रॉप आउट्स है ना, विमेन के लिए ये ज्यादा है. कुछ देर तक पढ़े, फिर उसके बाद छोड़ के चले गए, शादी हो गई, या शादी हो गई तो हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया तो कहीं और चले गए. नाउ दिस इज leaky pipeline. This is what we are facing, and all of you, me, I don't know about Maharashtra, but I'm sure in Bihar, Bihar, UP, Jharkhand, we face this early marriage. That is a big problem. What about you all? Do you all face this?
Yes, Not really, ma'am. Not not in really. No, I think Bhatta sir will not face it because he's from Karnataka. He will not face. In Karnataka, this is not a problem. In Kerala, Dini Menon, it's not a problem, but it's a problem in North India. Yes. Yes, sir, Bhatta sir. Yes, ma'am. It is not a problem in Karnataka. It is a It's problem. not a problem, I know, but it's a problem in North Not India. Leaky pipeline is not when you leak. not Yes. not everywhere. Only in some areas where the population of conservative thinking people is more. Yeah. So that is one thing, and even in rural areas, you have the same thing. So thank you so much, sir. Yes. 25% Yes. of the women are in higher education, but of this, if you see, just see the statistics, sir. Only 21.8% belong to SC and 15.9% belong to ST. What I'm trying to say is that there is very poor representation of SC and ST in higher education. Women को तो छोड़ दीजिए, SC ST का भी enrollment बहुत कम है. Increasing gross enrollment ratio and widening social disparities, क्या हम लोग ये कर सकते हैं? We are having missing women from the socially marginalized group. अगर आप रूरल एरिया देखेंगे, ट्राइबल एरिया देखेंगे, दलित में देखेंगे, पुअर में देखेंगे, माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम्स में देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इनका रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं हायर एजुकेशन में. ना पढ़ रहे हैं, ना आगे बढ़ रहे हैं, ना पढ़ा रहे हैं. So this is one thing. Now I come to the statistics, and I think when I asked you the question, the number of colleges and the number of universities, 2020 के आंकड़े देख लीजिए sir, ma'am, all of you. On the right hand side of the screen, you are having the number of colleges, which is 40,000 plus colleges, and on the left hand side, you are having the number of universities. और colleges को हमने line graph से दिखाया है, universities को हमने bar graph से दिखाया है. This is इनका source देखिए. What is the source? Source is AISHE. Now this also you have to know what is AISHE, and I am sure many of you know what AISHE is. AISHE is All India Survey of Higher Education. Yes. तो यहाँ ना इसका पोर्टल खुलता है और सभी कॉलेजेस को भरना पड़ता है. वी ऑल आर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वी हैव टू फिल इन. और आपके कॉलेज के जो नैक कोऑर्डिनेटर होते हैं ना, तो सॉरी नॉट नैक, IQSC कोऑर्डिनेटर, उनको ये जिम्मेदारी होती है कि प्लीज फिल इन. तो ये हम लोग को भरना पड़ता है. सो दिस इज द रियलिटी. 2020 के ही ये आंकड़े हैं और ये मैंने आपके साथ शेयर किया है. After 2020, things have changed. Okay, so this is something. Just a moment. Okay, so moving on. Yeah. So what hinders inclusion in higher education? That is the question that comes before us. We are talking about diversity. We are talking about inclusivity. So what is causing this hindrance? First is the lack of leadership. Now, what is lack of leadership? Lack of leadership is the region where you are belonging. There, that leadership should come in various forms. It can be at the institutional level, it can be at the state level, it can be at the community level. That should be. If a community, just now Bhatta sir told me that in our state this is not common. Early marriage is not common. Dini Menon will also say that it is not common because she comes from Kerala. Kerala has highest percentage of women going for higher education. But when you talk about Rajasthan, when you talk about Bihar, when you talk about Uttar Pradesh, वहां ऐसा नहीं होता है. वहां की लीडरशिप ही ऐसी है. वहां की कम्युनिटी लीडरशिप बोलिए, पंचायत लेवल पे लीडरशिप बोलिए, या वहां पर इंस्टीट्यूशन लेवल पे बोलिए, कहीं पर भी एजुकेशन को, एकेडमिक्स को बढ़ावा नहीं दिया जाता. सेकेंड जो
है insufficient resources, and I think रंजना मैडम का वो सवाल अभी आ जाता है. हाँ, हमारे पास resources insufficient है, not in the number of colleges. Maybe we have built a few colleges, we have built a few standalone institutions, we have built a few model colleges, लेकिन हमारे पास teaching faculty नहीं है, हमारे पास technicians in the lab नहीं है. तो insufficient resources का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास we are not having lab or we are not having a library. Maybe we are having a library, we are not updating the library with the latest books. Maybe we are having laboratories, we are not updating our laboratories with the latest chemicals, or the laboratory is non-functional, or we don't have technicians in the laboratory. Third is poor planning. हमारे देश में शुरू से जो प्रॉब्लम है वो है प्लानिंग का प्रॉब्लम. देन लैक ऑफ एंगेजमेंट अक्रॉस ए यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि देयर इज सो मच ऑफ रेड टेपिज्म इन डिफरेंट सेक्टर्स की कोई भी चीज स्मूथली होता ही नहीं है. चाहे वो आप एक नोटिस ही पास करो या कोई भी फाइल पास कराओ, उसका नहीं होता है. नॉन बैलेंस्ड अप्रोच है हमारे प्रायोरिटीज में. वी फॉरगेट व्हाट आवर प्रायोरिटीज आर and viewing inclusion as a simple quick fix rather than a sustained ongoing practice. हम लोगों ने मंडल कमीशन स्टार्ट किया था. We gave reservation for backward classes, SC ST. इस पर बहुत पूरे इंडिया में बहुत people got involved in various ways. Okay, but what happened is that we were trying to address this as a quick fix solution. We were not trying to keep it as a long-term sustained practice. So the seats were empty. Now what is NEP doing? Just now 2 days back, IASHE sent a letter, Higher Education Department, MHRD sent a letter to all institutions that you have to earmark seats for reserve categories. Most of the institutions, what we do is we don't earmark seat. We don't say that, okay, out of 100 seats, so many must be filled up with SC, so many must be filled up with ST. No, we don't do that. So we are taking them randomly because we want to fill up our seats. Sometimes it is the economic factor. पैसा फीस ले आते हैं बच्चे तो हम लोग उनको भर्ती कर देते हैं. फीस कौन बच्चा ले आ सकता है? जो बच्चा इकोनॉमिकली वेल ऑफ है. हमारे लिए for the not very well off, we are not having any sustained practice as such. हम लोग इंक्लूजन को ना एक बहुत ही चटकदार शब्द बना दिए हैं. We like to say that we are an inclusive society. देखिए हम सबको मौका दे रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनको मौका देने से नहीं होगा, उनको एक्सेस देना चाहिए. वो जो लड़का गांव में बैठा है, जो लड़का बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसको हिम्मत देना है कि वो शहर तक पहुंचे और एक एलिट इंस्टीट्यूशन में भर्ती हो जाए. What will the student feel in an elite institution? आप सोचिए, आपके महाराष्ट्र के, मान लीजिए औरंगाबाद का एक लड़का है. महाराष्ट्र में औरंगाबाद इज नॉट अ वेरी इट्स मोर ऑफ अ बैकवर्ड प्लेस ओनली. तो औरंगाबाद का एक लड़का पहुंच जाता है बिकॉज ही इज डन वेल इन स्टडीज, पहुंच जाता है सेंट स्टीफेंस में. 2 दिन में उसकी तो हालत खराब हो जाएगी बिकॉज देयर ही विल बी विद एलीट पीपल हु विल बी स्पीकिंग इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर. तो हम अगर इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो उनका ग्रूमिंग हम सही तरीके से क्यों नहीं करते हैं? उनको जब हम लोग बचपन से उनका ग्रूमिंग, when he is coming to school, when he is coming to college, why does he not feel included? Why do we always say that we are inclusive but we don't work towards inclusivity? So that is the basic question that I am asking. Lack of staff support, we don't have staff support, and either in terms of staff not promoting inclusion, वो भी होता है. बहुत जगह आप देखेंगे कि स्टाफ भी उस नजरिए से नहीं देखता है. I don't know about Maharashtra, but in Bihar and Jharkhand, caste is a very big factor. What about Maharashtra, sir? Is it, ma'am? Is it a big factor over there महाराष्ट्र also? में ये प्रॉब्लम है मैम. खासकर मैं बोलूंगी Okay. जब जैसे जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो हम्म, वो उसका एक अलग दर्जा बन जाएगा उस कॉलेज में. और बिल्कुल अगर उसका बिल्कुल. इंग्लिश नहीं अच्छा है तो उसको कुछ अच्छा भी आता होगा तो उसको कोई गिनेगा भी नहीं. यहाँ तक भी बिल्कुल होता है कॉलेजेस में.
बिल्कुल। तो सर मैम आप तो बात कर रहे हैं, शायद टीचर्स की बात करें, फैकल्टी की बात कर रहे हैं। ये आप बच्चों उन के साथ भी होता है। हाँ, स्टूडेंट्स के या बारे में सोचिए सर। मैम हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं और इंक्लूसिव हम लोग होते ही नहीं हैं, उनको एक्सेस नहीं देते हैं। नहीं देते। आप उनको लैंग्वेज सिखाइए, मेक अ लैंग्वेज लैब, देयर शुड बी अ लैंग्वेज लैब इन एवरी इंस्टीट्यूशन। उसमें जबरदस्ती उनको भेजिए टू ग्रूम देम अप, let them learn their language. I'll give you an example of my own daughter's her colleague. She is a researcher in Indian Statistical Institute Bangalore. उसके साथ एक लड़का महाराष्ट्र का है और वो एकदम बैकवर्ड कम्युनिटी का है। वो आया था लातूर डिस्ट्रिक्ट से, वो पढ़ने वहां रिसर्च करने आ गया। सबसे पहली बात जो उसने फेस किया कि उसका इंग्लिश सही नहीं था, एंड दे वर डूइंग रिसर्च इन एन एलीट इंस्टीट्यूशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि बैंगलोर में है। तो उनके टीचर ने, उनके सुपरवाइजर ने क्या किया, टू मेक हिम इंक्लूसिव, शी टोल्ड हिम यू जस्ट टेक सम फ्री लेसन्स इन इंग्लिश स्पीकिंग सो दैट यू डेवलप योर इंग्लिश। तो ये हुआ ना अप्रोच, आप उनको एक्सेस दीजिए, उनको बताइए कि आप थोड़ा इंग्लिश सीख लीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे, तब जाके वो लड़का कॉन्फिडेंटली वो कुछ कर पा रहा है। सही तो है। अगर हम इंक्लूसिव बनना चाहते हैं तो हमें उस लेवल पे नीचे अपने आप को ना उस लेवल तक ले जाना है जहां वो हमारा हाथ पकड़ना चाहे। वो हमारा हाथ पकड़ना चाहे तो हम उनको हाथ देंगे, तभी हम उनको खींच के ऊपर ले आ सकेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। सो हाउ कैन वी ऑफर बेनिफिट टू स्टूडेंट्स? आप देखिए मैंने कुछ लिख दिए हैं स्लाइड्स में, बहुत कुछ लिखा हुआ है एंड आई हैव हाईलाइटेड। First is you have to regard all students as your learning partners, okay, and taking their experience into account. So आज के बाद when you are going back to your classroom, please don't keep it a one-way communication. Let it be a two-way, and allow them to share their experience also. Let them be learning partners. जैसे कि आज मैंने आपको शुरू में कहा था कि एनईपी के बारे में हम जितना बात करेंगे ना, मेरी क्लैरिटी भी बढ़ेगी, आपकी क्लैरिटी भी बढ़ेगी। तो हम लोग एक दूसरे के लर्निंग पार्टनर्स बन जाए, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में भी ऐसा ही होगा, तभी हम जाके उनको इंक्लूसिव बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में है प्रोवाइड एन एक्सेसिबल टू ऑल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब ये क्या है, व्हाट इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म? दिस इज समथिंग विच वी लर्न over the years due to COVID. Thanks to COVID, we could learn how to go about online education system. So my suggestion is that each one of you can prepare your own repository of videos जो कि आप रिकॉर्ड करके, आपका लेक्चर आप रिकॉर्ड करो, वीडियो सिंपल लैंग्वेज में उनको समझाओ और वो चीज आप शेयर करो अपने स्टूडेंट के साथ, सो दैट वो लोग एट एनी टाइम दे कैन एक्सेस। तो ये आपका ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया। तीसरा है एक्सेसिबिलिटी विद इन दोज मटेरियल्स। आप उनको मटेरियल दो, वो कहाँ से पढ़ेंगे? लाइब्रेरी तक जाने में उनको तकलीफ हो रही है, they don't like, we even I scold my students ki why don't you go and sit in the library, why don't you learn why don't you develop the habit of reading in the library? But sometimes you know what happens, they are not very familiar with the language of the books. So maybe you can give them a little, you know, help them a little by giving them some materials, and ensure that the reading lists are created from different demographic backgrounds. जो हम लोग बीओएस में बैठते हैं, बैठ के हम लोग जो बनाते हैं, when we frame the syllabus and we frame the reading list, no, we are usually copy pasting those reading lists that are followed in University of Delhi. हमारे गांव के कॉलेजेस के लिए, हमारे जो बैकवर्ड एरियाज के लिए भी हमें रीडिंग लिस्ट बनाना है, सिंपल से सिंपल। आप सब किताब लिख के भी उनको हेल्प कर सकते हैं। मे बी योर स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड बाय योर बुक्स। Then record lectures and make them available and create a diverse number of learning opportunities and methods of assessment. ऐसा जरूरी नहीं है कि always the method should be an exam, क्योंकि स्टूडेंट्स एग्जाम से बहुत डरते हैं। यू कैन जस्ट टेल देम कि आप बोलिए, आपको इस टॉपिक पे बोलना है, आप बेफिक्र 5 मिनट बोलिए, and you will see that the student will develop the skill of speaking also.
and at the same time you'll be able to understand whether the student has understood or not. So these are simple things, we can do, each one of us can do within our campus, and we can make our campus more inclusive. So teaching tips and gender equity में avoid stereotypes. Avoid stereotype मतलब लड़कियों को बुके नहीं देना है, मतलब लड़कियां जो होंगी वो बुके नहीं देंगी, लड़कों से बुके दिलवाइए, लड़कियों को लैपटॉप हैंडल करने बोलिए, लड़कियों को साउंड सिस्टम हैंडल करने बोलिए. दैट इज यू आर अवॉइडिंग स्टीरियोटाइप. Second is you have to promote integration. Treat everyone equally but respect learning differences. Now, what is the meaning of treating everyone equally and respect learning differences? Vicky, the students who are coming from rural background, they may not have studied many things. Those who have studied in municipality schools or government schools or इवन रूरल स्कूल्स, उनके पास नॉलेज का वो भंडार नहीं होगा. आप कुछ भी बोल दीजिए, आप बोल दीजिए कि डिसर्टेशन लिखो इस पर, दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि डिसर्टेशन होता क्या है. तो हमें उनकी लर्निंग डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना है. दोज हु कम फ्रॉम प्रिविलेज बैकग्राउंड, उनके साथ जब वो स्टूडेंट बैठा है हु इज फ्रॉम एन अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड, वी हैव टू समवेयर क्रिएट अ बैलेंस. Okay, provide strong role models. Of course, you all are role models for students so that you can promote equal opportunity, make student achievement private. Now, what is this? हर student को ना शाबाशी की बहुत जरूरत है. So, irrespective of gender, irrespective of diversity, if you can make the achievement a private affair, छोटी सी छोटी बातें, you just take the name of the student and say that आपने ये आंसर बहुत अच्छे से दिया, या आप बहुत अच्छा ड्राइंग करती हैं, या आपने जो रंगोली बनाया था that was unique. That matters. They will feel inclusive. Avoid segregating activities. Again, I'm saying, please don't try to categorize or compartmentalize activities based on gender. No, there is nothing that a boy can do and a girl cannot do. Why should a girl be taking care of hospitality? कि चाय किसको देना है, कॉफी किसको देना है, वो लड़का भी कर सकता है. Because men are the chefs and the in the big hotels, it is the men who are actually looking after these things. The last thing is use wait time. Now, what is wait time? Any idea of what is wait time? किसी को कोई idea है? We are talking about students. What is wait time? Madam, if student is not able to grasp anything or he wanted some time to develop the skill, that should be a wait time. Yes, ma'am, you are partially right. Wait time is actually a few seconds that you're giving to receive an answer. उसको wait time कहते हैं. Like you put a question across to your students, and immediately who will be able to answer you? Yeah, that those 10 seconds, अगर आप उनको 10 सेकेंड का टाइम देते हैं ना, दैट इज योर वेट टाइम. उससे भी उनको फायदा होता है, उससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है. बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर वेरी हेजिटेंट टू स्पीक अप, लेकिन जब आप उनको वेट टाइम देते हैं ना, तो तब वो बोलना शुरू करते हैं, देन दे फील इंक्लूसिव. सो जेंडर इक्विटी की जब हम बात करते हैं, स्पेशली इन अ क्लास वेयर देयर आर मेल स्टूडेंट्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स, female may feel a little shy because they come from such background where they don't speak. So for them, wait time is very important. And we usually say that in gender, at least 10 seconds should be given as wait time. Okay? Because you can't give the whole, you have a 45 minutes, yeah, 1 hour class. आप किसी को एक सवाल करते हैं और वो कोई जवाब नहीं देता, आप 5 मिनट तो उसके पीछे नहीं बैठ सकते हैं, तो आपको तो जवाब चाहिए होगा, आप उनको 10 सेकंड दीजिए. बट ये मेरा तजुर्बा है कि 10 सेकंड में आंसर आपके पास आ जाएगा. तो आप कोशिश करके इसको देख सकते हैं. So now there are differences in culture. We were talking about this. Some ma'am had said that there is culture differences. Yes, in the campus. For example, language is a part of culture difference. Now I'll give you an example. In Marathi, you say tumi, no?
Yes, ma'am. Tumi means what? Aap. Aap. Tumi means aap. In Bengali, tumi means tum. So there is a language difference. Now, what is happening when you are in Maharashtra and you say tumi, then it is not taken as an offense. आप तो आप ही बोल रहे हो. But in West Bengal, when you're saying to me, it means you're saying you. So you can't refer to someone elder to you as to me. You have to refer to that person as aap. But in Maharashtra, to me means aap. So you can understand that there is a language. Language plays a very big part in culture difference. किसी किसी जगह पे ना जब आप हिंदी में बात करते हैं तो आप जो है नॉर्थ इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया में आप बोलते हैं, लेकिन वही पर्सन जब हम ईस्ट इंडिया में चले जाते हैं, वेस्ट बंगाल में चले जाते हैं, तो तुम करके स्टूडेंट्स को तुम बोलते हैं. लेकिन बिहार में, यूपी में, झारखंड में आप बोलते हैं. वी ऑलवेज रेफर टू आवर स्टूडेंट्स एज आप. सो ये जो लैंग्वेज डिफरेंस है वो क्या होता है, द टीचर हु इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट मे फील ऑफेंडेड बाय द स्टूडेंट, और अ स्टूडेंट मे फील आउट ऑफ प्लेस इन दिस टाइप ऑफ अ कल्चर. Then cultural difference in the language use also, when you're using that language, that is also there. The way you're using, your intonation, your voice. In Haryana, they speak in a very different type of a tone. But in Maharashtra or Gujarat, they will speak in a different type of a tone. In Tamil Nadu, they will speak in different type of a tone. So there is difference in the use. Then there is a difference in attitudes and belief. कैसे? बड़ों का पैर छूते हैं. If they meet a teacher, they will go and touch the feet of the teacher. Sometimes they will not touch the feet of the teacher. They will just join hands and do namaste. Sometimes they will go and shake hands with the teacher. So if you are in Goa, then a student might go and shake hand with the teacher. But if the same person is in Bihar or Uttar Pradesh, that person will be expected to touch the feet of the teacher, not shake hand. तो वो जो कल्चरल डिफरेंस होता है ना, अब हम बात कर रहे हैं कि हम सब एक है, लेकिन हमारे में अनेकता इतना है कि हम एक बन ही नहीं पाते हैं इन सब चीजों के लिए. देन देयर इज अपॉर्चुनिटी वर्सेस अचीवमेंट गैप. आपके पास अपॉर्चुनिटी कितना है और आप अचीव क्या कर रहे हैं. आपने अचीव नहीं कर पाया, जैसे हम क्लास में ना पूछते हैं, वी आस्क आवर स्टूडेंट्स, आप कितना परसेंटेज नंबर लेके आए हैं ग्रेजुएशन में. व्हेन वी आर टीचिंग पोस्ट ग्रेजुएशन, वी आस्क दिस, how much did you get in your graduation? Or if you're teaching in graduation, you ask the student, how much did you get in plus 2? Yes. Now someone will say I got 95% in plus 2, and someone will say that I got 78% in plus 2. No, because 78% वाला भी अच्छा किया है, he belongs to a state board. State board में ज्यादा नंबर नहीं मिलता, सीबीएसई आईसीएसई में ज्यादा नंबर मिल जाता है. तो उसको अपॉर्चुनिटी मिला था ना ज्यादा नंबर लेने का ना, तभी जाके उसका अचीवमेंट हुआ 78% का, या तभी जाके 98% मिला. सो दैट ऑल्सो हैज टू बी केप्ट इन द माइंड कि उसका क्या अपॉर्चुनिटी था, व्हाट बैकग्राउंड दैट पर्सन इज कमिंग फ्रॉम. देन वी विल जज द अपॉर्चुनिटी. ओके, सो यहाँ तक ठीक है. कैन आई मूव अहेड? Yes. Now talking about inclusiveness of girl education. Now just see this girl education. Can you see this? Yeah. I'm talking about gender equity. I'm talking about GER, gross enrollment ratio. I'm talking about STEM subjects. Okay. And I'm talking about dropout rates. ये सारी चीजें जो है, these are a part of a girl's life and a part of girl's education. Gender equity is not equality of gender. Equity means equal opportunity. First and foremost, you have to give equal opportunity to the student. Okay. Second is you have to have GER has to be improved for girls. फिर ड्रॉप आउट रेट्स हमको कम करना है. ड्रॉप आउट जो है ना, लीकी पाइपलाइन हम बोलते हैं कि पाइपलाइन से पानी निकलता जाता, दैट्स लीकी पाइपलाइन. वैसे ही हायर एजुकेशन तक पहुंचते पहुंचते अगर लड़कियां निकल गई, देन दैट इज लीकी पाइपलाइन. एंड देन स्टेम सब्जेक्ट्स. So STEM subjects are science, technology, engineering, and medicine. These things are taken up by more by men student and less by female student. So this is something we have to overcome.
Now, these are some of the safety measures that everyone has to undertake in the institution. There should be gendered budgeting. जेंडर बजटिंग का मतलब है कि हमें कुछ पैसा अलग से रखना है. वी आर अवेयर ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन. सबका जेंडर सेल होता है. Now it's mandatory to have a gender cell. Then there should be a sexual harassment cell where people can come and register their whatever their grievances are. Grievance redressal cell होना चाहिए. But more importantly, we should have gender budgeting. यानी पैसा अलग से रखा जाना चाहिए, उस पैसे को यूज करना चाहिए. Whether you're buying a sanitary napkin vending machine for your college, or you're buying a sanitary napkin incinerator for your college, or you're buying clean water, like you have this dispenser for the girls, you are creating separate washrooms for the girls. That should all be reflected in the gender budgeting of your institution. Moving ahead, now we move on to a lot of these three stages of higher education. First is the social diversity. जैसे हम एंटर करते हैं तब हमारे बीच सोशल डाइवर्सिटी बहुत एविडेंट हो जाता है. When we are entering the institution, I started my lecture today by asking you what are the things that we fill up in the form. And the things that we fill up on the form reflects our social diversity. हम किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, किस नेशनलिटी को बिलोंग करते हैं, कौन सा लैंग्वेज में बात करते हैं, किस जेंडर को बिलोंग करते हैं. दैट इज आवर सोशल डाइवर्सिटी. So that is the first information that we get from the student as the student enters the campus. The second thing that we notice is within the classroom that we have academic diversity. There are some fast learners, there are some slow learners. And we all have this. All of us are professors. We know that all students are not of equal caliber. Some of them are fast learners, some are slow learners. For fast learners, you don't have to worry much. But for the slow learners, you can always have remedial classes. You can have extra tutorials. Only then can we move to the topmost ladder, that is social inclusion. So this is what we understand diversity in higher educational institution. Okay. So now in higher education institution, of course, we are having income level disparities, regional disparities, rural, urban, social, then underrepresentation in post-graduation level of study. Girls do not go for पोस्ट ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन तक बढ़ के फिर छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी शादी हो जाती है या घर वाले चाहते हैं कि वो घर में बैठे रहे, शादी की तैयारी करे या कोई जॉब मिल जाए तो अच्छा है. फिर अंडर रिप्रेजेंटेशन इन प्रेस्टिजियस एंड एलीट इंस्टीट्यूशन. इट्स बिकॉज the family background or the social background prevents the girl from accessing those prestigious and elite institutions. So now NEP 2020, quickly, whatever I have said about NEP 2020, that's all there in the slide. And we are talking about equity, we are talking about inclusion. And if you see, I have tried to highlight those points in blue color. और ये स्लाइड मैं ना वर्षा मैडम को भेज दूंगी. यू कैन ऑलवेज गेट माय स्लाइड. आई डोंट वांट टू रीड आउट फ्रॉम हियर. The areas of intervention are, of course, we have to spread higher education all over India. We have to access even the remotest corner, offer hostels to girls, because you see, in some states, girls have to travel for long distances just to study. And recently we did a study on gender equity, and we found out that in a place called Dumka in Jharkhand, there's a university called Sidhu Kanu University. वहां पर जो गर्ल्स पढ़ने के लिए आते हैं, they are traveling 4 hours every day. सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं, 8 बजे तक आते हैं यूनिवर्सिटी में, फिर 4 बजे तक यूनिवर्सिटी में रहते, घर पहुंचते 6 बज जाता है. और ये 2 घंटा वो दे आर नॉट ट्रैवलिंग बाय बस और बाय ट्रेन. They're traveling by foot, then they're traveling by rickshaw, then they're traveling by train or bus. So it is a long and tedious journey.
Now these girls want hostels. So hostel facility should be provided especially for girls in every institution so that they can access higher education. And they should not be allowed to drop out. They should be tried to be kept back. So I conclude by saying this, that it's imperative to take forward the momentum of empowerment of girls and women through education in all institutes. In particular, it is time to focus on inclusion of female participation in higher education institutes and address a set of fundamental questions. So, 75 years of independence, and still we have underrepresentation of women in higher education. We have gross enrollment, which is not even half of the total enrollment of boys. So why this disparity? This disparity should not be there. We should have, because see, it is now an important part of our sustainable development goals, because we should have quality. If we are giving quality education to men, even women should have. We should have gender parity index, and that has improved over the years, but it has to improve more. We should have female only universities. That also should be there. Female only college, female only universities. More female teachers, more female researchers, more female administrators. So that is where we can bring about inclusivity of gender in higher education institution. And I end with Swamiji's quote that it is impossible to think about the welfare of any nation of the world if the condition of women is not improved. And the condition of women can be improved only through education. These are some of my references that I have used for my presentation. You can always look up these. And with this, I will stop sharing screen and take up a few questions. Preeti ma'am, I hope I have finished on time. Yes, ma'am. Prior to 12:30, we have 10 minutes more Yeah, so for we can take discussion. up a few questions. We can, of course, have some interaction because that's important. Yes, ma'am. So, Yes. Participants कुछ मैडम आप yes, बहुत अच्छे से बताती हैं, जो भी बता रही हैं वो समझ में भी आ रहा है और उसमें हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। वो बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर thank you दोनों so भी, much, उस दिन Varsha का भी ma'am. होगी। थैंक यू। Thank you so much, Varsha ma'am. May I know from where Thank you, you have madam. come? Yes. वर्षा मैडम पूछ रहे हैं आप कहाँ से है आपका कॉलेज और मैडम नागपुर आरएस मंडल धर्मपेट Yes, Bhatta sir, मैडम बोलिए. धर्मपेट Ma'am, कॉलेज। I am proud to say that Varsha Jappi ma'am is my colleague in my college, and Okay. she is a teacher in philosophy, and I am teaching commerce. And one more thing, हमारे कॉलेज में जैसे आपने बताया कि लेडीज एंड जेंट्स का जो ये वर्क अलोकेशन होता है, देयर शुड बी अ ब्रेक इन दैट स्टीरियोटाइप, एंड वी हैव एक्सपीरियंस दिस, और हमने ये हमारे कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। जैसा जो स्टेज डेकोरेशन एंड बाकी की जो चीजें हैं वहां पे आवर हेड इज वर्षा जप्पे मैडम, एंड वी आर प्राउड कि जब उनके हाथ में वो काम जाता है, इट इज कंप्लीटेड वेल इन टाइम, रादर बिफोर टाइम, एंड उनका Yes. काम जो है कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट जो है ना, इट इज एक्सेलेंट। सो आई एम प्राउड दैट वी हैव ब्रोकन दैट स्टीरियोटाइप, जो एक सिचुएशन होता है ना, एटलीस्ट इन आवर कॉलेज वी हैव ब्रोकन दैट। That's wonderful, sir. And आप तो पहले से ही sensitized हो गए हैं, है ना, Bhatta sir? You are all are sensitized because see, the Thank main you. objective of having this course was to sensitize everyone. So you all are sensitized. You know that stereotypes should be broken, and you have tried to break them. So that's a big, Yes. big. Thank you so much, sir. Yes, ma'am. Thank you. Thank you very much for the excellent Wonderful lecture, and session. thank you very Thank much. you, sir. Yes, Dini madam. First day also it was a wonderful session by you, and today also you explain all the aspect very nicely. And one thing I have to mention here that
As a faculty of Hislop College, Nagpur, we also proud that we treat both the gender equally. We distribute the work among boys and girls equally. We never biased about the gender कि girls weak होती है या boys weak होते हैं. धीरे धीरे ये awareness आ रहा है मैडम. मे बी अर्बन एरिया में थोड़ा फास्ट हो रहा है, रूरल एरिया में भी धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं. ओनली वी हैव टू डिस्कस मोर, सो इम्प्लीमेंटेशन भी जल्दी जल्दी हो जाएगा. बिल्कुल। प्रीति मैम, आपको याद है मेरा पिछले लेक्चर में आई डोंट रिमेम्बर, समवन हैड सेड, मैं रिकॉर्डिंग देख रही थी, समवन हैड सेड कि पुरुष श्रेष्ठ है और नारी कनिष्ठ है. आई डोंट रिमेम्बर हु हैड सेड इट, बट आई थिंक 7 दिनों बाद तो पुरुष श्रेष्ठ नारी कनिष्ठ कोई नहीं कहेगा, है ना? यस आप मैम. देख रहे हैं ना, सबकी बातें सुन रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि एवरीवन इज सो sensitized, and that is you, Preeti ma'am, you have done a big job by planning tried, it out in ma'am. such a manner. Yes, I Yes, tried exactly. definitely. And when you have such a vibrant team मैम of बैच इज वेरी गुड, participants, सपोर्टिव that's है, एंड मतलब एक्सेप्टेंस है उनमें. दैट इज जी मोर इम्पोर्टेंट. जी जी. यस. तो मैंने कुछ लोगों का तो आवाज ही नहीं सुना. मनीष चौहान सर, आप रहते थे या आप चले जाते थे ऑन करके? लांजेकर सर, लांजेवर सर, चौहान सर, आप लोग सब है? हाँ है मैडम. हाँ जी सर. मैडम इतना बोल रहे हैं, इतना सब कुछ, और रियली सेंसिटाइज हो गए हम ये 7 दिन 6 दिन में. हाँ जी सर. और किसी ने ये भी कहा था ना कि मैं अपने वाइफ को बहुत सपोर्ट करता हूँ. समवन हैड सेड नो दैट मैं अपने वाइफ को सपोर्ट करता हूँ, उसकी मर्जी का खाना हमारे घर में बनता है. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स, हम लोग करना ही पड़ता हमको. आपने कहा था, राजेंद्र सर ने कहा था ये. सब करते. हाँ करते. यस मैडम, यस. तो आप सोच लीजिए कि आप ऑलरेडी इतना सेंसिटाइज हो गए हैं. आप इस तरह से यू आर when you're talking so positively, that speaks a lot. And why not? हम और आप तो पढ़े लिखे हैं ना, तो हम लोग सेंसिटाइज नहीं होंगे तो समाज कैसे सेंसिटाइज होगा? So definitely sir. So thank you so much. मैडम Yes. लेडीज के लिए तो सेंसिटाइज, ये तो पहले से ही लेक्चरर है, इतना सीखे पड़े हैं, तो वो तो ठीक है. मगर मैं मेरा खुद का बोल रहा हूँ कि मैं थर्ड जेंडर जो है, इसके लिए इसके बारे में जो मेरा व्यू था, ये 6 दिन में पूरा मेरा चेंज हो गया. ये इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ. That's very good sir. That's very good. क्योंकि वो चेंज होना बहुत जरूरी है सर. और बिकॉज जेंडर, एज आई सेड ना, इट इज नॉट ओनली अबाउट मेल एंड फीमेल, इट्स ऑल्सो अबाउट द थर्ड जेंडर. एंड we should respect each and every human being, and that if we take that back today, आज 7 दिनों बाद अगर हम लोग, जो आपने कहा मनीष सर, if you are sensitized to that extent, तो that will be very nice. Just a minute. So that is the thing. Okay. चलिए. बट आप लोगों को एनईपी थोड़ा बहुत समझ में आया भी होगा, क्योंकि एनईपी में ये सारी चीजें हैं. You can just look up and see, and this Preeti madam has my contact number, because I have also done a course, जो इग्नू का कोर्स अभी चल रहा है, एनईपी का पीडीपी चल रहा है, तो प्रोग्राम, सॉरी नॉट एफडीपी चल रहा है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, तो वो मैं कर रही हूँ. तो उससे भी आई कैन हेल्प. इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी आल्सो एनईपी वाले में, आई विल ऑलवेज बी देयर, जेंडर छोड़ के भी. क्वेश्चन मेरा भी था मैम, मीन्स व्हाट वी आर डूइंग फॉर द कल्चरल इंक्लूजन, बिकॉज we are having so many states in India, but we are not having their cultural knowledge, even though the saints are there, और अदर बाकी की बहुत इंफॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स को हम नहीं दे पाते हैं. तो जैसे तमिलनाडु में देखो, कर्नाटका में देखो, तो उनसे हमारा कुछ एक्सचेंज नहीं हो पाता ज़्यादा. तो उसके लिए व्हाट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज डूइंग फॉर दैट? सुपर्णा मैम, पता नहीं आपके कॉलेज में ये हुआ था कि नहीं, 2019 में एक स्कीम आई थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत.
और उसमें क्या हुआ था, उसमें कल्चरल मिक्स करने की कोशिश की गई थी। दो इंस्टीट्यूट को एक दूसरे का पार्टनर बनाया गया। तो महाराष्ट्र का किसी कॉलेज को उड़ीसा का कॉलेज का पार्टनर बनाया गया। इससे क्या होगा कि कल्चरल एक्सचेंज होगा स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स जाके वहां रहेंगे और वहां के स्टूडेंट्स आके यहाँ रहेंगे, फैकल्टी भी जाएंगे आएंगे। ये दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म तिथि के अवसर पर आई थिंक 100th ईयर में ये लॉन्च हुआ था। 1 साल तक ये प्रोग्राम चला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना वो 2019-20 में वो आ गया था ना, this COVID had come, so it had to be, the cultural exchange of students was not possible physically. We were partner institution with Goa, हमारा गोवा के साथ पार्टनरशिप था। तो वो लोग हमारे यहाँ जनवरी में आने वाले थे, 2019 के जनवरी में आने वाले थे। तो somehow हम लोगों ने कहा कि आप जनवरी में बहुत ठंडा होता है, यहाँ मत आइए, आप ना मार्च में आइए। और मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो बात वो हो रही थी कि वो लोग आएंगे, हमारे यहाँ रहेंगे। करीब 30 स्टूडेंट्स विल कम बाय ट्रेन, दे विल स्टे इन आवर हॉस्टल। हमारे 30 स्टूडेंट्स वहां जाएंगे और 7-8 दिन रह के उस कैंपस में रह के वहां के स्टूडेंट्स से मिक्स करके वहां का कल्चर सीखेंगे, वहां क्या जो भी है वहां का खाना खाएंगे, वहां के ड्रेस के बारे में। सो दैट इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अनफॉर्चुनेटली एनईपी में ऐसा कुछ नहीं है। वो जो आपका फ्री एंट्री एग्जिट होता है दैट्स योर ओन, बट ये कल्चरल एक्सचेंज ऑन अ लार्ज स्केल इज नॉट देयर। That's not there. That's not there. That should be there actually. Yes, just short मैम course or some assignments that to go to different Yeah, cultures or yeah, like yeah. that. That They are that should not. be there. Yes. That should be Okay. there. Yes. कल्चर एक्सटेंड के लिए जो बच्चे भेजे जाते थे, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा था, तो उसमें कई बार ऐसा भी होता था मैम कि सिर्फ रहना, मजा करना, फिर वहां से इधर 8 दिन में वापस आना, और उतना इम्पैक्ट उन पे नहीं आता था। ये भी हम लोगों ने उस समय देखा था। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम लोग भी ना स्टूडेंट्स, आई एम अ ज्योग्राफी, बेसिकली आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। तो हम स्टूडेंट्स को ले जाते हैं अलग अलग जगहों में। एवरी ईयर आई प्लान अ ट्रिप। तो वो लोग मजा करने ही जाते हैं। जितना भी हम उनको कोशिश करते हैं समझाने की, देखो यहाँ का कल्चर ये है, यहाँ का फिजियोग्राफी ये है, यहाँ का लैंडफॉर्म ये है, आप देखो इसको समझो। यस उनको क्या पढ़िए, उनको सबसे अच्छा लगता है शॉपिंग करना। दे आर मोर यस इंटरेस्टेड इन शॉपिंग। वहां जाके इतना शॉपिंग करेंगे कि बस बाकी जो सर्वे वर्क है वो तो लिमिटेड हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है। सही वो तो बात है, सही मैडम हम डांटेंगे इसलिए सर्वे वर्क करते हैं कि सही शाम को बात। मैडम पूछेगी है। दैट कैन नॉट बी हेल्प्ड। अब क्या किया जाए, दैट इज सही सही थिंग टू। सो That is a student mentality actually. एक्चुअली क्या है ना, दे आल्सो वांट टू कम आउट ऑफ देयर, दे हैव नॉट बीन आउट Yes, एनीवेयर, फैमिली कहीं उन लोगों yes, को नहीं ले जाते हैं। Those things matter. So yes. that's it. Okay, please switch थैंक on यू your वेरी मच मैम, बहुत video. ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा। Thank you so much. Please switch on your video, all of you. I'll just take a Preeti ma'am. Can I? Yes, yes, please, ma'am, Yeah, please. I'll take a screenshot. All of you, please. Bhatta sir, आप नहीं दिख रहे हैं? I think कुछ अच्छा आगे आगे। Yes. Yeah. Thank you. Thank you so much. And Thank you. on behalf, I would personally like to thank Preeti ma'am for for organizing this and always inviting me. Thank you so much, Preeti. You work very efficiently and wonderfully. You're a wonderful coordinator. Same goes for Rekha Sharma ma'am. Yes. Detesh sir, I am indebted to HRDC Nagpur for having me in your forum and allowing me to share my knowledge with all of you. Thank It's you, wonderful. thank you And so thank much, you so madam. much. Yes, on Thank behalf you so of much, madam. HRDC Nagpur, Thank you, ma'am. thank you so much, ma'am. Thank you. Thank Preeti, you. I'll be mailing you my this PPT. presentation, जी PPT. मैं PDF भेज रही हूँ, आप उन लोगों के साथ जी शेयर जी, कर श्योर मैम, श्योर। थैंक So यू I'm सो मच leaving मैम। now. Yes, ma'am. Thank Thank you you. so much. Thank you. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Yes, thank you all of you. Now you just please be attentive for your attendance. जिनका मैं नाम लेती हूँ वही सिर्फ अनम्यूट करिए। डॉक्टर अमृता डोरलीकर,
Yes, ma'am. डॉक्टर कमलाकर तागड़े सर, Yes, ma'am. डॉक्टर सुपर्णा मुरकुटे, Yes, ma'am. डॉक्टर रंजना साहू, Yes, ma'am. डॉक्टर सोनल अग्रवाल मैडम, Yes, madam. डॉक्टर दीनी मेनन मैम, Yes, madam. मिस्टर राजू बुरीले सर, Yes, madam, present. डॉक्टर मुरलीधर राहंगडाले सर। देखिए ये लोग ना जब नाम लेते हैं तब बोलते नहीं, और उसके बाद जैसे मीटिंग खत्म होती है उनके कॉल आते की मॅडम मी प्रेझेंट होतो, आणि मी आज कोणाचेही कॉल रिसीव करणार नहीं आहे कि अगर आप मीटिंग में हैं तो आप तभी के तभी अनम्यूट करिए, या तो कनेक्शन नहीं है तो आप चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। देर आर नंबर ऑफ प्रोविजन्स आप जहाँ से अपनी प्रेझेंटी दे सकते हैं। रहांगडाले सरांचं नाव मला इथे दिसतंय, बट ही इज नॉट अटेंटिव्ह आय थिंक। मिस्टर प्रमोद पाटिल, Yes, ma'am. मिस शिल्पा मैम, Yes, ma'am. जपे मैडम, Yes, ma'am. भट्टा सर, Yes, ma'am, present. यस, डॉक्टर अर्चना देशमुख मैम, Present, ma'am. डॉक्टर मनीष चव्हाण सर, प्रेजेंट मैडम। डॉक्टर मोतीराज चव्हाण, Yes, ma'am. डॉक्टर राहिल कुरेशी, Yes, ma'am. डॉक्टर राजेश बहुरूपी, Yes, ma'am. मिस्टर सुनील गुगल सर, Yes, ma'am, present. डॉक्टर राजेश्री कडू मैडम, यस, मिस्टर शशिकांत डांगे सर, Present, ma'am. डॉक्टर मनीष मुड़े सर, Yes, ma'am. डॉक्टर किशोर धुमणे सर, Yes, ma'am. मिस्टर संतोष यादव सर, Yes, ma'am. डॉक्टर ज्ञानेश्वर लांजेवार सर, Yes, ma'am. डॉक्टर विश्वनाथ कोडपे सर, Yes, madam. डॉक्टर राजेंद्र चव्हाण सर, Yes, ma'am. डॉक्टर शरद कुमार पाटिल सर, Yes, ma'am. डॉक्टर पंजाब शेरे सर, Yes, madam. ओके, डॉक्टर शुभांगी दिवे, Yes, madam. डॉक्टर ज्योतिराम चव्हाण, Yes, madam. Present. डॉक्टर शिवरात अंजनीकर, Present, ma'am. डॉक्टर शीला मैडम, Yes, ma'am. Present. यस, डॉक्टर सुनीता मैम, Yes, ma'am. Present, ओके, डॉक्टर विकास चारी सर, चारी, या ओके। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे रुकते हैं, फर्स्ट सेशन अपना खत्म होता है। नाउ यू प्लीज प्रोसीड फॉर योर लंच ब्रेक। आवर नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट एट 1:30। Before going for break, I just want to give you few instructions regarding our valedictory program। 1:30 से 3 बजे तक अपना नेक्स्ट सेशन है, दैट विल बी द लास्ट सेशन। उसके बाद तुरंत ही हम शुरू करेंगे वैलिडिक्टी प्रोग्राम, जिसमें आफ्टर वर्बल वेलकम देयर विल बी रिपोर्ट रीडिंग, रिपोर्ट अबाउट अवर ओवरऑल 8 days 6 days कोर्स। रिपोर्ट के बाद फीडबैक फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स का एक पॉइंट रहेगा, जिसमें आप में से कोई भी 2 पार्टिसिपेंट विलिंगली, जिसको बोलना है विलिंगली, मैं किसी को भी कंपल्शन नहीं करूंगी, जो भी आपको बोलना है आप लोग म्यूचुअली डिसाइड कर लीजिए, या तो विलिंगली टाइम पे भी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आपका फीडबैक दे सकते हैं। फॉलोड बाय दैट देयर विल बी प्रेसिडेंशियल एड्रेस बाय आवर डायरेक्टर सर, एंड लास्ट वन इज वोट ऑफ थैंक्स। फिर उसके बाद नेशनल एंथम रहेगा। लेटर ऑन मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है। काइंडली म्यूट योर सेल्फ। शेरे सर आपका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट करिए, फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिस हो जाएंगे। अभी जिन्होंने पोस्टल एड्रेस का फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा, पहले तो आज की अटेंडन्स आपको मूडल साइट पे आठवणीने सगळ्यांना मार्क करायची आहे। सेकंड पॉइंट, पोस्टल एड्रेस का जो मैंने गूगल फॉर्म दिया है वो आपको पॉजिटिवली भरना है, और अपना 3 बजे का सेशन होने के बाद या तो वैलिडिक्टरी होने के बाद एक फीडबैक फॉर्म भी मैंने वो साइट पे दिया है, वो फीडबैक फॉर्म आप सबको फिलअप करना है। लेटर ऑन नियर अबाउट 3:30 और 4 o'clock हम सब लोग फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को आपके मेल पे रिलीविंग लेटर्स मिल जाएंगे। रिलीविंग लेटर का मैंने बताया था, इंडिव्हिज्युअल नाम से आपको रिलीविंग लेटर नहीं मिलेगा, एक ओव्हरऑल रिलीविंग लेटर आहे ज्यामध्ये लिहिलं आहे ॲज पर अटॅच्ड लिस्ट, आणि ती लिस्ट तुम्हाला अटॅच करून मेलमध्ये दिली आहे।
तो आप लोगों को दोनों का प्रिंट आउट निकालना है। परसों जब आप सबमिट करेंगे आपके कॉलेज में, एक ड्यूली साइंड कॉपी है जो डायरेक्टर सर ने साइन किया है रिलीविंग लेटर, उसके साथ एक PDF फाइल भी है। दोनों का प्रिंट आउट निकाल के यू हैव टू सबमिट दैट इन योर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। और जैसे ही अपने सर्टिफिकेट्स फाइनल बन जाते हैं, सबकी सिग्नेचर वगैरह हो जाती है, आई विल ड्रॉप वन मैसेज इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप कि सर्टिफिकेट्स रेडी है, आप कलेक्ट करने के लिए आ सकते हैं। और जिन्होंने पोस्टल एड्रेस दिया रहेगा उनको वो स्पीड पोस्ट किए जाएंगे उनके रिस्पेक्टिव पोस्टल एड्रेस पे। पोस्टल एड्रेस देते समय प्रेफरेबली होम एड्रेस दीजिए। कॉलेज के एड्रेस पे जनरली मतलब एक दो बार ऐसे हुआ है कि सर्टिफिकेट मिसप्लेस हुए हैं, तो प्रेफरेबली जिनको पोस्ट से भेजना है अपना होम एड्रेस ही दीजिए। बस दीज आर ऑल द इन्स्ट्रक्शन्स. नाव वी विल मीट ॲट 1:30. कोणाला जर काही विचारायचं असेल तर तुम्ही आता विचारा, अदरवाइज आय विल एंड द मीटिंग. एनी क्वेश्चन? फीडबॅक आणि ते याच्यानंतर फीडबॅक भरायचं आणि ना मॅडम? पोस्टल ॲड्रेसचा फॉर्म तुम्ही आता पण भरू शकता वेळ असेल तर, आणि फीडबॅक फक्त व्हॅलिडिटी झाल्यानंतर भरा, कारण की या लेक्चरचं पण नाव त्याच्यामध्ये आहे, ठीक आहे, तर ठीक. ते झाल्यानंतर भराल. ठीक है, ओके. चलिए यहाँ पे रुकते हैं. Thank you, ma'am. थैंक यू ऑल ऑफ यू. Okay.